ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, राइट? जो चीजें आप आराम से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नॉर्मली वो फिलॉसफी होती है। अगर ये ऑब्जर्व हो सकती और इस पर कोई फैक्ट अप्लाई किया जा सकता तो फिर ये साइंस होती। अगर ये आपका बिलीफ का पार्ट है तो ये रिलीजन है। तो बहुत ज्यादा कोशिश ये होती है कि जेन्युइनली, बिकॉज आई नो कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो वेरी ऑब्वियसली मेरा एक रिलीजियस कॉग्निटिव बायस होगा। हमने कॉग्निटिव बायसेस को पहले स्टडी किया, सही है। हमने फिलॉसफी को डायरेक्ट स्टडी नहीं किया ना, हमने एपिस्टेमोलॉजी में गए, ओंटोलॉजी में गए, हम मेटाफिजिक्स में गए, क्वांटम फिजिक्स में गए, इसलिए कि ताकि हम फिलॉसफी की बेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन ये सारे टॉपिक्स इसलिए नहीं थे कि हम अपने मकसद से हट जाए, मकसद फिलॉसफी है, ठीक है। तो टुडे इज एसेंशियली द फर्स्ट टॉपिक ऑन फिलॉसफी, like the very first topic of a basic identity question, that who are you, like who are we, कौन है आप? तो इस पे आज बात करेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि अच्छा, आज रिलीजन को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि रिलीजन ना आए चीजों में, लेकिन आज कोई और एक्सप्लेनेशन है नहीं मतलब आइडेंटिटी की, अनलेस कि हम रिलीजन को भी थोड़ा फिक्स कर लें। लेकिन जेन्युइनली पर्पस ये नहीं है कि आपकी थॉट्स को रिलीजियस किया जाए। मेरा जाती ख्याल ये है कि द वे रिलीजन इज बीइंग टॉट इज नॉट द राइट वे, इवन इफ यू आर रिलीजियस, सही है ना। मेरा ये ख्याल है कि रिलीजन इज नॉट अबाउट यू वर्सेस मी और दिस वर्सेस दैट, इट इज अबाउट फाइंडिंग द आंसर ऑफ कि व्हाट इज द राइट थिंग। मतलब इट्स अस वर्सेस द क्वेश्चन, you know, and these are the types of the question, like who are we. It's the question that is more important than the answer itself, you know. So even if we spend the whole time just thinking about this question, it's worth doing. Maybe there is no other purpose of life just to other than just finding this answer of the question, right? So before we start, who are we, इससे पहले important ये है कि are you, like, do you exist? I think that's what I am. Yeah, right. So do you really exist? Like, what is the nature of your reality? Whatever you are perceiving, whatever you are seeing, is this real, or is this something which is not real, which is just your illusion, right? It is very much possible when you are in a dream. When you are in a dream, you understand that that's not the reality. You understand that, right? But in the dream yourself, you actually make a full reality. At that time, you don't know that you're in a dream. At that time, you can feel the pain, you can feel the emotions, you can feel actually the hurt of falling down, standing up. You can actually do mathematical calculations too, right? You make your own reality, right? तो जैसे उस टाइम भी पता था कि आप ड्रीम में, हो सकता है ये भी ड्रीम हो सकता है थोड़े से बाद हम उठ जाए, हम कहें ओहो ये तो हम ड्रीम में थे, सही। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने आंसर करने की कोशिश की, लेकिन रेने देकार्ट, बहुत फेमस फिलोसोफर, इनका इस पे काफी ज्यादा काम है। तो he was a mathematician himself, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम पर्सनैलिटीज पे बात ना करें ज्यादा। हम एक दो फिलोसोफर को हल्का फुल्का टच करेंगे, लेकिन हम फिलोसोफर्स की हिस्ट्री, फिलोसोफर्स का कॉन्टेक्स्ट, इस सारे को हम एक दफा जो फिलोसफी कवर करेंगे उसमें हम अवॉइड ही कर देंगे, क्योंकि इससे मैंने देखा कि फिलोसफी नहीं बिल्ड होती, इससे आपका ना लव ऑफ फिलोसफर बिल्ड हो जाता है, सही है। और लव ऑफ फिलोसफर इन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपको, इफ यू फेल इन लव विद रूमी, व्हाट डज इट मैटर? मतलब Rumi should be about the knowledge that he has given, right? It should not be the man himself, right? So we romanticize philosophers more than philosophy. The art of philosophy is not to learn about the quotations of philosophy, but to really make you think about the things that matter, right? So René Descartes ने question किया कि यार, whatever we know for the fact, whatever we know that it's the truth, it could have been false also. Like, we know for the fact that dinosaurs existed at some point, but maybe they didn't. Maybe this is the reality that is told to us. We believe for the fact that 2 + 2 is 4, but maybe it's 5, maybe it's 6, maybe. So he said that maybe there is a demon sitting somewhere, and that demon is telling us that whenever we do this calculation of 2 + 2, he makes in our mind that nahi 5 hai. So yeah, there is a demon who is making us doubt the reality in a different form. So maybe everything that we believe is could have been false. So there are things that are truth, that are false, but can the truth be false? That's the question. Could the truth be false? So for example, let's suppose if you see a stick and it's very straight, but then you see that same stick through water, तो आपको थोड़ा कड़वी सी नजर आएगी, सही। क्या स्टिक कड़वी हो गई? या आपका पर्सपेक्टिव ने उसको कर्व कर दिया, सही। रियलिटी क्या है उस स्टिक की?
सही है. तो ये जो reality of things है ना, that can be very much driven by your own perception. तो इसका मतलब ये कुछ भी real नहीं है, इसका मतलब कुछ भी truth नहीं है, इसका मतलब सब कुछ, anything is questionable, right? So this idea is called skepticism. You just question everything. There is a shaitan demon sitting somewhere. हमने Laplace's demon पहले पढ़ा था. एक demon है जो बैठा हुआ है, आपके thoughts को corrupt किया जा रहा है, और whatever you are thinking is corrupt. Whatever you are thinking is not real. It's probably happened in past. It's probably not happening. It's just a reality that you have made. I think I am seeing you. Maybe I'm not seeing you. Maybe you are not real. Maybe I am not real. Maybe I am just a part of the game, right? But the thing is that when I am thinking, and when there's a demon who is making me doubt, that means a doubt in itself is a thinking, right? So, and thinking in itself cannot happen if there is no I. Like if मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं सोच रहा, तो thinking हो नहीं रही है. सही है. Thinking के होने के लिए किसी की existence जरूरी है, right? ये doubt करने के लिए भी कि क्या ये real है या नहीं real है, सही है. There has to be someone present. वो क्या है, वो कौन है, वो उसको define करेंगे. लेकिन there has to be someone present, right? सही. So therefore, he came up with this idea of cognito ergo sum. सही है, जिसको हम जानते हैं I think, therefore I am. सही. But then he realized that you think, therefore you are, is essentially saying if P then Q. It's a logical syllogism, right? So if P then Q. So you think, therefore you exist. But maybe you thought, and that's why you existed, but now you are not thinking. You just are reading the old memory that you existed at somewhere. So right now you don't exist, but you think you exist because at some point you thought that you existed. सही सही है. उसको मैं आसान सा बताता. देखिए, हम सारों ने बचपन में सुना था कि यार गेम्स खेलने से ना लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है. सही है. वीडियो गेम्स खेलने से. सही है. उस टाइम पे रिसर्चेस भी यही आई थी जब नई नई वीडियो गेम्स आई थी कि यार इससे खेलने से ना आपका दिमाग तेज होता है. सही है. लेटर ऑन एक रिसर्च आई कि हाँ, जब एक नई गेम आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्ट्रेटजी गेम में मैंने चेस खेलनी स्टार्ट की, राइट? सो चेस इनिशियली इज अ गेम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? इनिशियली जब मैं चेस खेलूंगा ना, तो मैं आपको हराने की कोशिश करूंगा. मैं एक्चुअली में जेन्युइन मूव्स करूंगा, ठीक है? मैं अपने दिमाग को यूज करूंगा, मेरे एक्चुअली में आईक्यू बढ़ेगा, ठीक है? बट एट सम टाइम इट विल जस्ट बिकम योर मसल मेमोरी. सही है. एट सम टाइम इट विल जस्ट बी सो लॉजिकल that you don't have to be present in the moment. You just do it, like driving a car. Initially आप अगर सोच नहीं रहे होंगे ना, तो आप गाड़ी ठोक देंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा ना कि आपने क्या करना है. अच्छा यार गियर लगाना है, अच्छा यार क्लच दबाना है. Mindfulness needs to be there. You exist, that's why you are driving a car. But later on it just becomes your muscle memory. Your mind does not involve. Just like that in games, sometimes it becomes your muscle memory, and that's why some people are so fast that even the delay of their brain involvement is not does not happen. Their reflexes are so strong that they're just faster than their brain, right? न्यूरल पाथवे बन गए. एक बार बन गए, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. तो मे बी मैंने जिस टाइम सोचा था कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, उस टाइम तो मैं एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं नहीं एग्जिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि सही है. तो देन ही चेंज दिस थिंग इनटू rather than I think therefore I am to I am thinking therefore I am. तो जब भी आप ये सोच रहे हैं तब तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये नहीं सोच रहे हैं तो तब आपकी एग्जिस्टेंस का कुछ पता नहीं है. मे बी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, मे बी आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. सही. तो दैट इज द ओनली एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट वी नो एज ऑफ टुडे, कि इफ वी आर थिंकिंग अबाउट एग्जिस्टिंग, दैट मींस वी एग्जिस्ट. इफ वी डोंट थिंक अबाउट एग्जिस्टिंग, मे बी वी डोंट एग्जिस्ट. सही. खैर, लेकिन दैट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. देखो, चलो ये तो पता लग गया कि हम एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, अब हम सोच भी रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हम हैं कौन? मतलब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, राइट? सो Rene Descartes ने एक there is this theory that he presented. It was called Cartesian dualism or mind body dualism, right? So there are two different theories. अच्छा, ये masked man fallacy को तो 2 मिनट छोड़ दे. Mind body dualism. Mind body dualism is a philosophical concept कि you are not your body. सही है. You are the subconscious thoughts that you are. सही है. Mind से मतलब ये mind नहीं है जो आपका brain है, ये mind की बात नहीं हो रही. Mind से मतलब आपकी जो subconscious thoughts हैं, हाँ, जो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो कि एक्चुअली में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ यू. व्हेन वी से यू, सो देयर इज अ फिजिकल बॉडी दैट एग्जिस्ट. सही है. दैट फिजिकल बॉडी कैन बी यू, बट मे बी द ब्रेन
or your thoughts or your thinking, your memory, whatever you've learned, your experiences, and the thing that you are deciding for future, maybe that is who you are. So for example, let's suppose अगर आपकी बॉडी में किसी और का ब्रेन डाल दें तो क्या वो आप बन जाएंगे या जहां पे आपका ब्रेन गया वो बन जाएंगे, राइट? शिप ऑफ थीसिस हमने पढ़ा था पहले, थोड़ा सा अगर वापस रिमाइंड करें उसको. सो रेने कार्ट का कहना ये था कि माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन यू आर योर ब्रेन. सही, कहीं बैठे मैंने कोई ना कोई जगह मारने को तो खैर, तो maybe you are your brain, maybe you are your thoughts, maybe you are not your body, your body in itself, and that's also support the concept of permanency, right? के maybe when you are dead, so the particles that made up you, so basically we are made up of molecules and particles and energy. ठीक है, हमें ये भी पता है साइंस में कि every particle, every energy, matter cannot be destroyed, cannot be created, energy cannot be destroyed, cannot be created. It was there. सही है, हम whatever particles has made up me and whatever energy that is inside me was also inside somebody else also. सही है, मेरे पैदा होने से पहले किसी और के अंदर थी, मेरे मरने के बाद किसी और के अंदर होगी. सही, it is very much possible that the world that I am currently living in is the product of somebody of the same molecule, same body in some other incarnation of somebody else, right? So maybe इसका मेरा कोई 7वां 8वां जन्म है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन maybe I am living in this beautiful world where science is there. मेरी body को कोई pain होती है तो उसके लिए pain killer exist करती है, क्योंकि some other molecules of my own body in some other form has made these cures for me, a better world for me to live, right? If you believe in this theory, to make a better world for your future self to live, because आपके जो molecules दोबारा वापस आएंगे तो you don't want them to live in a bad world, So the view that we are not physical or material things like a watch, like bag of cells. We are our subconscious thought. That's what we call mind-body dualism, right? And that makes a hope of morality, right? And so immorality, right? So we will exist, we will keep on existing even if we are dead. See? अच्छा, तो let's suppose अगर ऐसा ही है कि we are our subconscious thoughts, we are our memory, तो exactly उसमें से कौन सा पार्ट है जो डिफाइन करता है कि ये हैं हम? Let's suppose आप एक कार एक्सीडेंट में और आपका ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पार्ट होगा जो कहेगा कि यार अब ये उस्मान ही रहा, अब now this is not the same guy, right? Maybe so basically कौन से psychological traits हैं जो खदीजा नूर को उस्मान से सेपरेट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि खदीजा नूर in her body is not Usman in his body, because body does not matter. It's the mind, the perceived, the thoughts, the experiences that I know is what matters, right? So what are the traits? What is the exact thing that differentiate Ariba from Usman? Memories, right? Memories, thinking, experiences. So history of how it's shaped. Personality, how would you define personality? Like, for example, like, one's an extrovert, one's an introvert, so that kind of, Okay. But again, all of these things are coming from your subconscious or unconscious mind. So I think वो तो वही रहेगा ना आपका. So आपका जो भी everyday experiences हैं, how you behave, how you take things, how you understand things is based on your subconscious. ठीक है. तो अगर आपका subconscious है, तो I think that's going to drive you in the future as well. सही. Maybe both. Maybe. अच्छा जी. So there are different philosophies on that. So there is this question asked by John Locke. So अभी हम philosophers को different discuss कर रहे हैं, obviously. और तो इसमें से John Locke एक philosopher गुजरा है. तो he presented this problem कि let's suppose एक prince है जिसकी सारी memories, सारी thoughts, सारा कुछ एक cobbler के mind के अंदर आ गई हैं. तो अब वो जो बंदा जो अब exist कर रहा है वो एक cobbler है या prince है? सही. तो this is a John Locke theorem. What do you think? कि अगर एक prince की सारी memories, सारा कुछ ब्रेन वाइज जो उसकी सबकॉन्शियस थॉट थी एक कॉबलर की बॉडी के अंदर आ गई, तो अब वो प्रिंस है कि कॉबलर है? टाइटल्स तो हम डिफाइन करते हैं ना कि वो प्रिंस है या कॉबलर है. तो क्या आइडेंटिटी है उसकी? क्या आइडेंटिटी? तो उसकी सारी मेमोरीज, थॉट्स, उसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस. तो वो कॉबलर है कि प्रिंस है? प्रिंस है. कॉबलर है. प्रिंस है. वो सेपरेट आइडेंटिटी है because कॉबलर because royalty is physically, it's like by blood and the body is So how are you defined? By your body or by your mind? Final कर लें बॉस. लेकिन नहीं मखलूक है ना, देखो दो. I mean, the state of being royal is defined by blood, ना?
is defined by blood. So अगर आपका blood transfuse कर दिया जाए आपके अंदर तो फिर मतलब आपकी genetics वगैरह तो जो dialysis कर रहे हैं वो तो फिर हर दफा नए आते हैं new blood new me if it's defined by blood. I feel like he's still a cobbler. Prince or a cobbler is a title that society. वो अपने आप को cobbler में eventually shape up कर देगा, उसका lifestyle ही बदल जाएगा, वो prince थोड़ी ही रहेगा, वो लोगों को यकीन भी नहीं दिला सकेगा. अच्छा हम जो religious लोग हैं ना हम ये समझते हैं कि we are our souls. सही है. We are not our bodies. सही है. ये हम भी बिलीव करते हैं, क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं, सारे जितने रिलीजियस लोग हैं ना वो ये बिलीव करते हैं कि एक सोल होती है और एक बॉडी होती है. सोल निकल जाती है, बंदा मर जाता है. ठीक है. बंदा इन इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता, सोल हमेशा रहने वाली है. ये सारा कुरान का कॉन्सेप्ट, सारे जो सेमेटिक रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट है, राइट. इसी वजह से अब खैर हम बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो मैं जब नया नया दीन पे आया ना तो मुझे कुछ टॉपिक्स ना बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे. ठीक है. हमारे सेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं. ठीक है. हमारा सुन्नियों में एक सेक्ट होता है बरेलवी और एक होता है देवबंदी. ठीक है. और बेसिक लड़ाई जो दोनों में है ना, जो बेसिक लड़ाई है, मतलब यानी जो मैंने समझी है, और यकीन करें कोई एक एजेंडा नहीं मेरा. सही. मैं जेन्युइनली मैं रिलीजियस हुआ था, मैं समझ आ रहा था कि यार क्या साइंस है इनकी. तो समझ में आया कि यार एक ही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नूर थे. ठीक है. और एक कहते हैं कि नहीं वो नूर नहीं थे, वो क्या थे, इंसान थे, बशर थे. राइट. तो जितनी अरबी मैंने पढ़ी थी मुझे हुआ यार अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं. और लेट्स सपोज अगर वो नूर थे तो फिर मुझे क्यों उनको फॉलो करना. वो तो नूर थे, मैं तो नूर नहीं हूं. सही है. तो why is he the example for me? मतलब what's this sorcery, you know? So I went to different Maulvis and different this and that, whoever claims to be the or generally this is how I did it. ठीक है. तो अगेन कोई एक चीज नहीं मैं कर रहा. तो बहुत कुछ बुक्स पढ़ने के बाद मुझे शायद फिजान मदीना में ये मिला, या किसी गालिबन मेहर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किसी की बड़ी की बुक में मुझे मिला कि देखो हमने भी कुरान पढ़ा है, हमने भी अरबी पढ़ी है, और हम ये समझते हैं कि बशर का मतलब कुरान में क्या है. सही. तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसा हदीस में आता है ना कि जब एक गुनाह करता है तो एक काला धब्बा लग जाता है दिल के ऊपर, और फिर नेक्स्ट टाइम गुनाह करता है एक और काला धब्बा लग जाता है. तो करते करते आपका दिल जो होगा वो जिस्मानी सा हो जाएगा, वो आपका दिल काला हो जाएगा. राइट. बट लेट्स सपोज अगर आप एक नेकी करते हो तो एक नूर आ जाता है आपके अंदर. सही है. और आप नेकी करते रहो तो आप रूहानी से बन जाते हो. सही है. तो रूहानियत आ गई आपके अंदर जी, आप ऑल वाइट हो गए. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कभी गुनाह नहीं करते थे, वो हमेशा बहुत रूहानी थे. तो दैट्स व्हाट दे रेफर टू, दे वर पीस ऑफ लाइक they were filled with noor. सही है. मतलब they were in a human body but they were filled with noor. So that essentially the concept of soul. सही है. तो जितनी आपकी सोल, हम ये समझते हैं कि हमारी सोल जो है वो हमें सच की तरफ बुलाती है, हमारी सोल जो है हमें हक की तरफ, या ज़मीर की आवाज, और ये वो जो सारी बातें होती हैं. या इमरान खान यू नो तो ये ज़मीर की आवाज है, ये हमारी सोल है. सही है. और जितना हमारी सोल हमारे जिस्म पे हावी होगी, यानी जितना हम गुनाह की आदत डाल लेंगे, सही है, उतना हमारा जिस्म हम पे हावी हो जाएगा. मीठा खाने की आदत डालो, बस अब बॉडी कंट्रोल ही नहीं हो सकती. सही है. वर्सेस अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में ले आओ तो अब आपकी सोल आपके काबू में है. सही है. आपकी बॉडी आपकी जो जरूरियात है उसके काबू में है. राइट. सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है जो कि हमारा है, मतलब रिलीजियस लोगों का. तो मे बी योर सोल इज समथिंग दैट डिफाइंस यू. राइट. बट देयर इज ऑब्वियसली इफ वी टेक दिस एज अ ट्रूथ, तो इस पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि आर यू योर बिलीव्स और आर यू योर इमोशंस. सही. इस पे थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. तो व्हाट वी डिड वाज कि लेट्स सपोज अशर साहब हैं, कहां है अशर साहब? तो अशर साहब ये बिलीव करते हैं, नहीं चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, मार्क साहब हैं. सही है. क्योंकि एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है. मार्क साहब ये बिलीव करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये गलत है. एग्जांपल है बॉस. सही है. मार्क साहब ये बिलीव करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है. सही है. लेकिन अंदर से हैं वो भी गए. मतलब मिसाल ही है ना, मतलब क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो रियलिटी क्या है असल में? मार्क साहब इज रियल में इज हिज रियल सेल्फ अ गे और अ पर्सन हु इज नॉट गे, बिकॉज़ he genuinely believes from inside that it's very very wrong to be gay. सही है. तो what is, how will we define Mark? सही. तो कैसे करेंगे, मतलब उसका ट्रू सेल्फ क्या है? ट्रू सेल्फ उसका बिलीफ है कि I people should not be gay, it's very wrong, it's subconsciously I don't believe in this thing and I'm disgusted with this topic. Right. Is that my true self? Yeah, I genuinely feel love for the right for my same gender. Let's suppose. ठीक है. Second one, you think
what you really feel passionate about is your true self. सही, सारे यही बिलीव कर रहे हैं. सही, कोई ये बिलीव नहीं कर रहा कि अगर सबकॉन्शियस ज़मीर की आवाज है कि गलत है तो गलत है. आप कह रहे हैं फर्स्ट वन कि यार जो आपकी ज़मीर की आवाज है वही रियल है. Any other thoughts? But emotions dominate हो जाते हैं ना, तो वो passionate है जिसके बारे में वो real में, और वो वही वो तो करेगा, लेकिन who he is really ये कैसे डिफाइन होगा? इमोशन, उसकी इमोशन से, बिलीफ से नहीं, इमोशन से, बिलीफ से, बिलीफ से, इमोशंस को बिलीफ. I think जब हम उसको observe कर लेंगे जो उसमें real में when you study metaphysics too much तो वो जो होगा वो होगा. भाई वाह, भाई वाह. When you study too much metaphysics. अच्छा, तो प्लेटो पे आते हैं जरा वापस. ठीक है, there was a very famous philosopher, we all know that. प्लेटो की उर्दू क्या होगी? अफलातून. Yeah, Socrates का शागिर्द प्लेटो, जिसने एकेडमी का कॉन्सेप्ट बनाया था, राइट? He came up with this concept of forms and particulars. सही, forms is anything. So what he believes is कि जब भी कोई ये अब एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो होता है जो पत्थर से बनाता है, स्टोन वाला, स्कल्पचर्स, हाँ, वो जो भी होता है ना मुजस्मे बनाने वाला, यू नो, तो वो जब मुजस्मा बना रहा होता है ना, तो एक मुजस्मा उसके जहन में होता है कि यार मुझे ऐसा बनाना है, राइट? एक इमेज उसके जहन में होता है, द आइडियल इमेज ऑफ व्हाट ही वांट्स टू मेक, राइट? और एक वो होता है जो रियलिटी में बन रहा होता है. सही है. So the thing that is a theory of the forms, right? So the thing that is in the mind, that is perfect, that is ideal, that what we call the form. He called the form. And the thing that comes up is the particular. Particular is the reality. So we believe in कि यार love ऐसी चीज होती है, तो वो the form of love है. सही, वो love नहीं है. Love तो वो होगी जो हम execute करेंगे, जो हमारे साथ होनी है बाद में. जो मैंने लाइफ में लिखी है वो particular हो जाएंगी ना. लेकिन जो हमने assume किया है वो हमारा फॉर्म है. सही, अब वापस आते हैं. तो which of these aspects हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि one of these, the beliefs is the form and the emotions is the particular. ठीक, प्लेटो की थ्योरी पे. ठीक, अच्छा, अब इसमें से रियल कौन है, रियल कौन नहीं है, इसके लिए एक bunch of experiments किए गए. ठीक, bunch of experiments में so the question was that maybe when the people are thinking about their true self, what they do is thinking about what they want is what is their belief versus what they believe is what is right, you know, what they truly want. So they conducted this experiment on bunch of different people, like उन्होंने कुछ डेमोक्रेट्स बुला लिए, कुछ रिपब्लिकन्स बुला लिए. डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का सीन ये होता है कि डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो यूजुअली लिबरल्स होते हैं, सही, हमारे जुबान में मॉडर्न लोग, सही, और कंजर्वेटिव्स या रिपब्लिकन्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जो थोड़े रिलीजियस होते हैं, जो थोड़ी सी पुरानी सोच वाले होते हैं कि यार नहीं, एक कंजर्वेटिव सोच होनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं, राइट? सो they were presented with this option of Mark, a guy who believes कि यार ये wrong है homosexuality, लेकिन he feels like being a gay. सही है, तो what is his true self? तो जो liberal लोग थे उसने कहा यार that belief is not part of his true self. सही है, क्योंकि what he feels is truly what he is. सही, अभी भी यही हुआ ना, जो थोड़ा सा लिबरल ज़हन के हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं यार जो उसको फील हो रहा है वही है वो. सही, राइट? I identify myself. It's your right. You should identify whatever you want to. So that's your true self. So जो liberals थे उन्होंने ये कहा, सही. जो conservatives थे उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है. जो आपका belief होता है, जो आपकी form होती है, that is your true self. That is who you are truly. सही. ये experiment हो गया. अब उन्होंने example जी. But belief is something जो आप लोग आपको knowledge देते हैं. मतलब like आप पैदा तो नहीं होते ना किसी belief के साथ. वो सारे आपके अंदर बिल्ड किए जाते हैं. Sure. और वो जो इमोशन के साथ वो सोच रहे हैं, that is something he actually is. Okay. How do you know? बिलीफ की बात की जाए तो बिलीफ तो लोगों ने बताया ना उसको. हो सकता है उसको ऐसी खबरें मिली हों जो चुस्त हों और ऐसे रोके मिले जो बहुत खूबसूरत हैं, उसने हिसाब लगा लिया कि यार यही होता है. प्रॉब्लम ये है ना उसके बिलीफ खराब थी किसी नहीं, मतलब आपने कहा ना पैशन डिफाइन करता है. पैशन होता है ड्राइव्ड बाय हिज रियलिटी हो जाए. मे बी बिलीफ्स का मसला ना, मे बी पैशन मतलब हालात ऐसे मिल गए कि समझ सकते हैं ना. सोसाइटी भी आपका रोल प्ले करती है ना, कि जिस सोसाइटी में आप बड़े हुए हैं, सोसाइटी किस तरह की है. जी मैं वैसे जज कर रहा हूँ कि आप किस सोसाइटी में बड़े हुए. खैर, तो अच्छा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एग्जांपल स्विच कर दी. ठीक है, लोग भी स्विच कर दिए, एग्जांपल भी चेंज कर दी. ठीक है, अब की बार इन्होंने
जो करेक्टर बनाया ना वो उल्टा था, राइट? सो ही फाउंड होमोसेक्सुअलिटी genuinely disgusting अंदर से, सही है, लेकिन he's a very liberal guy. Now the example is of John, a guy who is genuinely disgusted with the concept of homosexuality. हाँ, नहीं, लेकिन वो चूंकि लिबरल है तो वो ये कह रहा है कि नहीं यार ये उनका राइट होना चाहिए. Everyone has the right to choose whatever they want to choose. यानी अब वो प्रीच कुछ और कर रहा है लेकिन उसका बिलीफ ये है कि नहीं ये तो गलत है, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं डिस्गस्टेड हूं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है. यही सेम एग्जांपल दोबारा ग्रुप ऑफ पीपल के सामने प्रेजेंट की गई जो कि लिबरल्स थे वर्सेस कंजर्वेटिव थे. अब की बार लिबरल्स ने कहा नहीं यार इसका बिलीफ इसको सही डिफाइन कर रहा है, सही. यू सी व्हाट हैपेंड? अब की बार लिबरल्स ने कहा नहीं जो ये बिलीव कर रहा है ना वो ये ट्रू सेल्फ है, और कंजर्वेटिव्स ने कहा नहीं जो इसका पैशन है वो इसका ट्रू सेल्फ है, सही. वी डू दैट ऑल द टाइम. वो कहते हैं ना convenient religion, है ना? हाँ, confirmation bias. What did he believe this time and what was the true form? Right. So कोई explain करे जी. He believed that it's okay to be gay, but he was disgusted by it. So wasn't that the same as Mark? नहीं उल्टा हो गया ना. Mark was eternally he liked it, but he thought that it was Yeah, it's okay. so believe करता था कि ये Okay. लेकिन ये believe करता था कि ये सही है, eternally disgusted. सही है. तो जस्ट बिकॉज हमने एग्जांपल चेंज की उनके आंसर्स चेंज हो गए, क्योंकि असल में क्या हो रहा है, असल में वो फिर इससे ये निकला बात कि मे बी इट्स नॉट द एक्चुअल बिलीफ पार्ट और द वैल्यू और पैशन पार्ट दैट मैटर्स, इट्स द पार्ट दैट डिफाइंस के कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, सही है, कि मैं इनमें से किस चीज को ज्यादा वैल्यू कर रहा हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सही है. दैट डिफाइंस हु आई एम, सही है. इट्स नॉट पीपल ऑलवेज think that your beliefs are your true self, and it's not that people always think that your emotions are your true self. It changes based on what you are valuing right now the most. Okay, whatever you give the most value, that defines you. See, but that does not solve the problem. Who am I? गल उठी आ गई, सही है. कि मतलब ठीक है, ये सारी बातें हो गई कि बिलीफ ही होता है, इमोशंस ही होती हैं, दोनों आपको मिलकर डिफाइन करते हैं, और मे बी इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ. मे बी ये भी हमने समझा कि यार हो सकता है माइंड हो सकता है बॉडी हो, लेकिन माइंड की तरफ ज्यादा ज़हन जा रहा है कि यार मे बी हु वी आर एज अ सबकॉन्शियस पार्ट, दैट्स हु वी रियली आर. आवर बॉडी ये तो जस्ट एक रियलिटी ऑफ फिजिक्स है जो हमें दिखा दी गई है. मे बी दैट्स नॉट हु वी आर. सो हमें परसीव नहीं हो पा रहा ना, राइट. सो लेकिन फिलोसफर इसको कैसे करते हैं? फिलोसफर कहते हैं जी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कौन सी कंडीशन थी जिसमें आपकी प्रिजर्वेशन ऑफ योर आइडेंटिटी की जाएगी, मतलब आपकी आइडेंटिटी को याद कैसे रखा जाएगा. दैट इज प्रोबब्ली हु डिफाइंस यू, सही. आपकी आइडेंटिटी आपकी प्रिजर्वेशन से डिफाइन होती है, सही. तो इसके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज ये एलिथा है एक खातून, ये कहीं एल पासो में रहती हैं, मेडिसिन में काम करती हैं, स्पाइसी फूड खाती हैं, और मे बी इनको जिम करने का शौक है, राइट. सो एक आइडेंटिटी डिफाइन हो गई कि यार ये एक खातून है और ये सब. अब हमने दोबारा हम करते हैं कि यार इसकी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होगी. तो देयर इज दिस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नैरेटिव थ्योरी कि वी आर नॉट होमो सेपियंस, वी आर होमो neurons. We are the story that we tell ourselves. सही. हम वही हैं जो हम स्टोरी बता रहे हैं अपने आप को, सही है. जो स्टोरी हम लोगों को बता रहे हैं कि यार दिस इज हु आई एम, सही है. यार आई एम अ फिलोसोफर, आई एम अ entrepreneur, I'm a father, I'm a religious person, whatever. Like whatever story you are telling to the world or yourself, that is who you are. सही. Whatever story that you truly believe. वो स्टोरी नहीं जो आप अपनी डेट को बता रहे होते हैं, ब्रो मैं तो no, वो नहीं. The true story that you are truly believing in yourself and you are telling the world also. And that story, हम कहते हैं manifestation is the power of making your own reality. Right? That's the story that you tell. And if you believe, truly believe, और ये religion में भी है और ये philosophy में भी है, हर जगह में है, the story that you tell makes your reality. Right? So मोमेंट की नीयत उसके अमल से बड़ी भी है, सही. तो it's just the नीयत that matters. मोमेंट की नीयत उसके अमल से बड़ी भी है, सही. It's the नीयत, it's the story नीयतों पे है, right? So whatever you perceive, you manifest it. That's who you are. ठीक. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्टोरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि योर स्टोरी इज नॉट ट्रूली सेंट्रल, सही. सेंट्रल स्टोरी क्या होती है? सेंट्रल स्टोरी होती है यार मैं एक आर्टिस्ट हूं, सही है, ये मेरी सेंट्रल स्टोरी है, लेट्स सपोज. लेकिन एक्सीडेंटल स्टोरी क्या है कि बॉस आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिलते तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे पैसे कमाने, सही है. सो योर स्टोरी दैट यू टेल एंड इज ड्रिवन योर लाइफ is usually not driven by
what you truly are is driven by what accidents happen to you. Circumstantial है, ठीक है, ये circumstantial है, आपका existence, आपका सब कुछ जो है सब है. एक तो ये प्रॉब्लम, ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपकी लाइफ हुई, कुछ प्रॉब्लम्स आई और आप रेस्ट इन पीस हो गए, सही है. तो अ स्टोरी यूजुअली हैज अ क्लाइमैक्स एंड हैज एन एंडिंग, ठीक है. और पीक एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था कि अ स्टोरी का पीक मैटर करता है और एंड मैटर करता है, सही है. तो अब हम सारों को तो ये पता है कि डार्विन एक साइंसदान था जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी, द बिगेस्ट थ्योरी ऑफ मैनकाइंड. अब इससे बड़ा साइंसदान कोई नहीं है. लेकिन दैट्स नॉट हाउ ही नरेटेड हिज स्टोरी. उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था उसने कि मैं बहुत डिप्रेस आदमी हूं, वो डिप्रेशन से मरा था क्योंकि उसने डार्विन थ्योरी तो 27 इयर्स की एज में निकाली थी, मरा वो बहुत अरसे बाद जाके. और दैट्स नॉट हाउ ही परसीव हिमसेल्फ, दैट्स नॉट द स्टोरी दैट ही इज टेलिंग. तो हु वाज ही ट्रूली? So the problem with story is that it has two problems. One, it is driven by the accidents that happen to your life, okay? And that does not define your true self. Maybe you are a very, very, very honest person. Maybe you are a very kind guy, but you were born in Gaza. What would you do? Kindness is not an option for you. Maybe you're born as orphan. Maybe being polite is not an option for you, right? But that's a story, but that does not define you. Then exactly here the question remains, what defines you? Who are you? See? So now we come to the last philosophy of who we really can be. So we can be the development of our character, the character that we built. The last episode of today, whatever my character is, that's what I am, the values that I hold. See? That what defines Usman, that's what defines Sajjad, that defines Asher, like the character that I have. It's not the story, it's not the circumstantial presence, it's your character that you've built. And everything that is given to you is just to build a character. So your circumstances was just to see what comes out of you, and that's very religious also. So it makes me वो भी तो है ना, सॉरी मैंने कट किया था. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हदीस है ये क्या है, बट वो था ना कि मोमिन के ऊपर मुश्किल आती है तो वो खुश हो जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे करीब करने के लिए मुश्किल डाली, और खुशी का टाइम आता है तो परेशान हो जाता है कि अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया. तो आई थिंक सर्कमस्टेंसेस और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ही तो ये सारी राइट. सो रिलीजन में यानी अब रिलीजियस को थोड़ा सा लाना पड़ेगा, ठीक है. फिलॉसफी में, रिलीजन में आपका सेल्फ इज ड्रिवन बाय योर कैरेक्टर, यानी सिफात, जो सिफात आप लेके आ गए. यानी रिलीजियस, नॉर्मली रिलीजन जो हमें पढ़ाया जाता है ना, इट इज मोर अबाउट हम जो चीजें अदा कर रहे हैं, दाढ़ी रख ली, पर्दा कर लिया, नमाज पढ़ ली, मतलब हार्डवेयर ना, सारे चेक बॉक्सेस पूरे कर लिए. दीस चेक बॉक्सेस आर नॉट द रियल रिलीजन दैट शुड हैव बीन टॉट टू अस. नो, द रिलीजियस पार्ट. इसी वजह से कब्र में या जो क्वेश्चन है वो एक्चुअलिटी पे है नहीं ना, मतलब कि तुम पढ़ने का यकीन किसे लेके आओ. लाइक हमें भेजा, मतलब कुरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और ये सॉरी रिलीजियस बात है, यू डोंट हैव टू फॉलो दिस इज माय पर्सनल थॉट प्रोसेस. कि जब हमें भेजा गया तो कुरान में कहता है ना कि लस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हें इकट्ठा किया, हमने पूछा क्या हम तुम्हारे पालने वाले नहीं है? तो सबने कहा कि यस आप ही हैं, राइट. फिर हमें दुनिया भेज दिया, और राइट जैसे ही हम मरेंगे तो कब्र में कहते हैं मट्टी बराबर नहीं होगी. पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारे रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, राइट. तुम किससे पलने का यकीन लेके आए हो, राइट. सो यकीन असिफ, सही, तुम्हारा यकीन क्या था कि तुम्हें कौन पाल रहा है, राइट. और इस तरह सारे क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सिफात. तुम्हारी कुर्बानियां हम तक नहीं पहुंचती, कुर्बानी गोश्त हम तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसके पीछे तुम्हारी जो इंटेंशन होती है वो हम तक पहुंचती है, राइट. सो द कैरेक्टर, द सिफात दैट यू हैव बिल्ट, सही. तो एज फ्रेडरिक नीचे वुड से कि character is a great and rare art, because and it keeps on developing by the stories that you tell them yourself, the stories that you hear, your society, your everything shapes up your character, and your job is to make your character. That's it. It's a very difficult job, and that's what defines you. Eventually आपने क्या अचीव किया, क्या उखाड़ा, सब कुछ हुआ, वो तो एक स्टोरी है जो लोग बताएंगे. और हो सकता है आपकी बहुत कमाल स्टोरी हो, लेकिन लिखने वाला कोई मौजूद नहीं था, तो वो स्टोरी कोई जानता भी नहीं, सही है. लेकिन हो सकता है आपकी स्टोरी इतनी कमाल नहीं थी, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर ली, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी मूवी बन गई आपके ऊपर, तो आप कमाल हो गए. हालांकि स्टोरी कुछ भी नहीं है, बस एक मैन है और उसने बहुत अमीर हो गया, सही. कैप्चर करने वाले की ब्यूटी थी, राइट. दैट शुड नॉट डिफाइन हु यू आर. योर स्टोरी शुड बी अबाउट मोर अबाउट दिस, राइट. सो मुझे इसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला जब किसी का तारुफ करवाते हैं ना, ये कुरान मजीद की आयत है कि वो हजरत इदरीस का तारुफ करवा रहे थे, हजरत इदरीस का. तो उसमें वो कहते हैं कि ही वाज अ मैन ऑफ ट्रूथ, सही है. यानी ही वाज, अल्लाह ताला किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि यार वो बहुत सच्चा आदमी था, ठीक है, उसकी सिफात से. दैट्स हाउ
he is known कि he was just very truthful, सही? या Allah loves those who keep themselves pure, right? तुम में से तकवे वाला कौन है? कोई काला है, गोरा है, वो मैटर नहीं कर रहा, तकवे वाला कौन है, right? So at the end of the day अल्लाह ताला भी वैल्यू कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर किस में है, सही? तो maybe your identity, all the philosophies are there and you can question everything, but at the end of the day maybe the only, so and that's my personal take from this, और verdict जो होते हैं ना, मैं कोई verdict में कोई बोर्ड थोड़ी लगाऊंगा, मुझे पता होगा क्या है वैसे रियल, ठीक है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपनी थ्योरी बना रहा हूँ. मुझे जो समझ में आया वो यही आया कि यार at the end of the day you are the character that you've built, that's it. There is no other solution to really defining who a human is, right? So which also concludes the topic and really makes me think, okay, what am I doing to make my character that defines me, right? So I hope that we end up being a hero at least in our own story, by building a character that we are proud of. और अब आप देखें कि कितना irrelevant है कि आपके वालिदैन आप पे proud हो या आपकी नेशन आप पे proud हो. अपनी स्टोरी में तो सभी हीरो होते हैं. हाँ, लेकिन नहीं, आप अपनी स्टोरी में कई लोग ना अपनी स्टोरी में साइड कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी स्टोरी में भी हीरो नहीं होते, सही? यानी जब आप अपने वैल्यू सिस्टम से हट के बात करते हैं तो आपको खुद थोड़ा सा अपने ऊपर वो होता है ना कि यार मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो गया हूँ, राइट? वो सेल्फ रिस्पेक्ट सामने खोइए, अपने सामने खोइए, राइट? करते रहेंगे तो फिर वो कैरेक्टर इतना डल हो जाता है कि फिर वो दोबारा आवाज ही करना बंद करता है, राइट? सो बट इसको वापस आना जरूरी है. सो whoever you are, whatever you are, just think of building something, and the fastest way of building something is slowly, सही? So slowly build your character, become somebody that you are proud of yourself. Okay? That concludes. अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे लैंग्वेज के ऊपर बात. लास्ट टाइम हमने एक बुक डिसाइड की थी कि वो पढ़नी है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस. किसने पढ़ी, शुरू की? सही, कुछ समझ में आया? मजा किसी को भी नहीं आया मोस्टली. हाँ, मोस्टली लोगों को मजा नहीं आया. बाय बाय जी.